Now question number 2. Draw an isosceles triangle with base 5 cm and sides 3.5 cm. पहले मैंने बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस का मतलब एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. उन लोगों ने दिया है मेजरमेंट. बेस दिया 5 सेंटीमीटर. बेस बोला तो नीचे का पार्ट दैट इज बेस एंड अदर साइड बोथ द साइड ऑपोजिट साइड्स 3.5 सेंटीमीटर. पहले हम लोग रफ फिगर बनाएंगे. ये बहुत इजी है. इसको एक नाम दे दो 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड बोथ द साइड्स आर 3.5 सेंटीमीटर. नाम लिख के हो गया. रफ फिगर भी रेडी हो गया. अभी हम लोगों ने क्या करना है, फेयर फिगर बनाना है. मेजरमेंट ले लो. फर्स्ट यू टेक 5 सेंटीमीटर. मेजरमेंट यू टेक 5 सेंटीमीटर. That name it as 5YZ, that is 5 centimeter. Then take your compass and measure 3.5 centimeter in your scale. Okay, 3.5 centimeter. Take, then draw one arc from Y, then draw one arc from Z. Okay, then you join the arcs. Here both are 3.5 centimeter. This you name it as X. So XYZ is a isosceles triangle. Now question number 3 is given. Draw an equilateral triangle with the side 6.5 centimeter. ये क्या करना है, इक्विलैटरल. इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल है. सो मेजरमेंट क्या है, तीनों का मेजरमेंट 6.5 सेंटीमीटर. तुम लोग क्या करो, एक ट्राइंगल का नाम देना ABC और तीनों साइड 6.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो. दिस इज रफ फिगर इज ओवर. देन टेक योर स्केल, देन draw 6.5 centimeter line. Okay, give the name BC, that is 6.5 centimeter. Then take your compass. compass में measurement ले लो 6.5 because this is equilateral triangle. 6.5 का measurement लेना. लेके B point से एक आर्क करो. C से और एक आर्क करो. Okay, then join the arcs. Okay, then give the name A. Both the sides are 6.5 centimeter.